आदरणीय मंत्र्यांनो व उपस्थित पाहुण्यांनो, आमचा सादर सप्रेम नमस्कार. आज बिचगाव मराठी कैलाशनाथ मंदिराचा 17वा वाढदिवस आहे. हा सोहळा मॉरिशस मराठी मंडळी फेडरेशन, मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट, मराठी स्पीकिंग युनियन आणि बिचगाव मराठी कैलाशनाथ मंदिराच्या सहयोगाने आयोजित करण्यात आला आहे. तर या सर्वांच्या तर्फे आपण तुम्हा सर्वांना मनपूर्वक स्वागत करतो. शुक्लं वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः. ॐ लक्ष्मी करोतु कल्याणम् आरुदन संपदा मम शत्रुविनाशाय. We shall now proceed with our cultural program. आमचा बाप्पा हा प्रथम पूज्य आहे, म्हणून आमच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ आपण श्री गणरायाचे वर्णन करणार आहोत. तर मोरया विनायका या गाण्यावर चालीवरती बिचगाव कैलाशनाथ मंदिराचे कलाकार नृत्य करणार आहेत. तर जोरदार ताल्याने त्याचे स्वागत करूया. तनु लंबोदर गजमुख साकार तू इन्हीं लोकी वंदनीय अभिजित ओंकार तू. या मुनि कण कण विराट विश्वरूप धारी तू. या मुनि कण कण विराट विश्वरूप धारी तू. अवतारक अंगारक अटल विघ्नहारी तू. श्री वरदहस्त हे गण गणनायक. हे श्री वरदहस्त हे गण गणनायक. विलय करी विपदाचा मोरया विनायक. विलय करी विपदाचा मोरया. सद्बुद्धी सद्विवेक सन्मतीचा स्वामी तू. सद्बुद्धी सद्विवेक सन्मतीचा स्वामी तू. अणुरेणुत मनवेणुत प्रकट सकल धामी तू. सृजनाचा बीजांकुर सकल सिद्धिदायी तू. सृजनाचा बीजांकुर सकल सिद्धिदायी तू. कालाच्या नियंती सृष्टीच्या प्रभावी देई अभय करुणामय मंगल अभय करुणामय मंगल वरदायका. विलय करी विपदाचा मोरया विनायक. विलय करी विपदाचा मोरया विनायक. गणाधीशा गुणाधीशा शुभंकरा शुभानना. गणाधीशा गुणाधीशा शुभंकरा शुभानना.
आमच्या समोर येणार आहेत बेचुकाप मराठी कैलाशनाथ मंदिराचे यायवर. तर ताल्यांच्या गजरात त्यांचे स्वागत करूया. आम्ही देवा अंबेचे गोंधळी नाचतो अवघ्या भूमंडळी. आम्ही देवा अंबेचे गोंधळी नाचतो अवघ्या भूमंडळी. देवीच्या नावाचा मातेच्या नावाचा आईच्या नावाचा जागार चालला वाजरा दिला. संतांना सारीची झंड मारीची शक्तीचे जरा बेल फुल दीप धूप उडे भंडारा. देवीचा आईचा अंबेचा देवीचा आईचा अंबेचा. काही देशांना तू व्यापून राहणारी तीन ताळ पाताळी तू. रंग तुझे सारे हे कैक दे भारे भवताली बसले जणू. निजरूपे गेला खया दोन डोळ्यात माते गेली साठवू. लक्ष्मी तू जगदंबे काली कधी अंबे नावे किती आळवू. विश्वाच्या जन्माचा सुखानं जगण्याचा स्रोत तू खरा. राहो तुझी माया किरपेची दे छाया असो आसरा. कोटी सूर्य चंद्र लीन पायीशी तुझ्या. देवीचा आईचा भवानीचा देवीचा आईचा भवानीचा. हे अंधार जागला झाद हा भागला धातो जरी सावल्या. होत प्रकाशाची माते तुझी खाशी वाटा किती दावल्या. सागर भरताना मागे तू बसताना चिंता कशाची पुरी. पंखात येई बळ लागे आता ना झळवळव्यात असलो जरी. शिवशक्ती धावगे शिवशक्ती धावगे शरणांना पावगे आधार जीवा. संकटे हारशी सद्गतीत धावशी दिवस नवा. तुझ्या पदराची छाया माझे जरा. देवीचा आईचा भवानीचा देवीचा आईचा भवानीचा देवीचा आईचा भवानीचा. माझी दिलाच्या दर्गन मनाच्या स्वर्गन राणी ठेवीन तुला. माझी मामाची मम्मीला काकाची काकीला सांगून ठेवलंय घरा. क्यूट स्माइल
merci pour faire moi chief guest aussi de sa fonction-là. Bien reconnaissant, merci de l'accueil. Et moi aussi, pareil comme tout les autres précédents orateurs, moi bien content. Moi avec les autres aujourd'hui, nous allons célébrer un grand jour, 70 années d'un mandir, le Marathi Kailasnath Mandir de Béjucap, 70 ans, beaucoup d'années ça. Beaucoup de temps, parce que 3 quarts, un siècle. Et nous devons se rappeler, 70 ans de cela, comment nos pays étaient. Nous sommes encore une colonie, nous passons même maintenant l'indépendance, nous appartenons à la Britannique, qui est une pauvreté extrême, à l'époque-là. À peu près 15 ans avant l'indépendance, et le pays tient l'autre. Et nous devons vraiment dire merci, saluer ce père fondateur de ce mandir-là. Et nous disons merci, vous n'êtes pas avec nous. Moi, je suppose majorité ou bien de tout, qui a eu l'idée pour créer ce mandir-là ici dans Béjucap, un petit village perdu dans nos pays lointains, avec tout problème de transport, tout problème de communication qui tient là à l'époque-là. Mais vraiment, c'est un grand acte d'héroïsme pour nous capable d'imaginer créer un mandir, ça à l'époque-là, quand dans la misère qui existait dans nos pays. Et c'est un mandir, comment nous devons faire beaucoup de progrès et nous saluer tous les autres dirigeants, toutes les autres générations qui finissent l'année après l'année, décennie après décennie, ils continuent à faire ce bon travail spirituel, religieux et social pour lequel le mandir s'est créé à l'époque. Alors, moi personnellement, je connais le mandir moi ici bien longtemps, avant même que je suis dans cette circonscription-là. Avant même 1990, je disais ça, je crois ici. Je me rappelle un de mon cousin qui marié avec une petite fille dans la région. Moi, je fait débarquer comme avocat, moi, j'ai 25 ans par là, 26 ans qui toi. Et moi, je viens ici, évidemment, comme on ne peut que tendre d'aller là, je dis là, tu es en tôle, tu es en petit bois eucalyptus. L'estrade, tu es ici, colonne eucalyptus partout, fait tôle là-haut. Et doucement, donc, l'idée est venue pour, avec les temps, avec progrès, pareil, comme tout nous, la case, la paille disparaît. Qui boit que la paille, mais nous avons lieu de culte aussi, nous avons baïtka, nous avons dire aussi qui besoin cette place à une nouvelle construction. Et je me rappelle, un jour, ça m'a fait cause entre l'année 2000 et 2005, moi je suis ministre d'un autre gouvernement. Il y a des petites causes s'opposer avec moi. J'espérais des rappels. Je me rappelle, moi, j'ai un Swami depuis Nouvelle-France. Je suis venu le vaste qui position pour bien mettre un nouveau mandir, si comment dire, pull down l'ancien. Et je me rappelle, à l'époque-là, moi, je passe par Simé, Samarel jusqu'à Soazi. C'est un Simé qui je te rappelle un peu ban frère ou un qui n'est pas avant ça s'y met là tu coltaré dans quel état l'été tu veux un roule doucement cassé trop partout et heureusement tout ça là derrière nous aujourd'hui nous pouvons vivre dans un pays beaucoup plus développé et à cause de ça aujourd'hui à l'image de ce pays qui est développé là nous avons un bâtiment religieux un lieu de culte qui est adapté avec sa nouvelle période moderne dans laquelle nous vivons. Pareil comme tous les autres composantes de nos communautés, de nos pays. Nous prenons la communauté tamoul par exemple. Tous les autres covilles peuvent être une coville ancien mais moderne en même temps. Ancien mais nouveau. Bien sculpté, etc. Dans toute communauté, aujourd'hui, nous tout progrès qui est là au niveau d'un lieu saint. Lieu, quand nous prions, quand nous faisons la prière, nous tous, comme un seul pays, tous les différentes composantes, nous réaliser la nécessité adaptée avec la modernité, nous
nous avons lieu de prière, nous avons lieu de culte. Donc, c'est à cause de ça, je suis content de dire, Gandé, nous présidents, bravo, félicitations et toute l'équipe. Parce que nous connaissons ça, comment passer d'un travail, tout le temps, l'équipe qui va, soit un chef encadré de ce ban lieutenant, de ce ban collaborateur, c'est eux qui risquent à caler cela. Les autres du monde viennent, mais il y a une équipe tout le temps qui prend responsabilité. Et l'équipe là même, les autres épaules même, qui tout tracas, tout stress posé, pour être capable de finir, terminer le projet. Alors, donc l'évolution de notre bâtiment ici, doucement, tout progrès qu'ils ont fait. Et moi, je suis content, félicite l'équipe ici.